Hello student, today I am teaching you English for class 5th. Our today's topic is articles. The words a and the are special adjectives called articles. तो आर्टिकल जैसे हमको पता है, हमने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि the words like a and or the are the special adjectives called articles. So an article is an adjective. आर्टिकल अपने आप में एडजेक्टिव होते हैं जो कि विशेषता बताते हैं, बिकॉज लाइक एन एडजेक्टिव एन आर्टिकल ऑल्सो मॉडिफाई अ नाउन. क्योंकि जैसे एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताते हैं, उसी तरह आर्टिकल भी नाउन को मॉडिफाई करते हैं कि वो एक है या वो ज़्यादा है या वो अपने आप में स्पेशल है. The only difference is that an adjective describes a noun and an article points out a noun. थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो एडजेक्टिव है वो डिस्क्राइब करता है नाउन के बारे में कि नाउन क्या कर रहा है, उसकी विशेषता बताता है. एंड आर्टिकल इज पॉइंट आउट द नाउन. ओके, सो आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स. आर्टिकल के टू टाइप्स हैं. वन इज योर डेफिनेट एंड अनदर वन इज indefinite. So we will study first indefinite articles. So indefinite articles like a and an are indefinite articles. We use these articles when we talk about singular and nouns. तो हम a और an article का use हम तब करते हैं जब हम singular noun की बात करते हैं. So let's proceed. A is used before the nouns that begins with the consonant sound or letter. तो ए हम नाउन से पहले लगाते हैं जब उसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड हो. जैसे कि एक्सेप्ट योर वावल्स, रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स आर कॉन्सोनेंट्स. सो लाइक आई टूक अ ट्रेन टू दिल्ली. सो ट्रेन टी. ओके, द नेक्स्ट शी वॉन्ट्स टू बाय अ शैम्पू. सो before shampoo a. Next, he will have a cup of tea. So a cup. Okay, next an is used before the nouns that begin with a vowel sound or letter. जैसे an अपने आप में noun से पहले यूज हो रहा है in case of vowel. Example, did you bring an umbrella? So here umbrella, though it is the vowel started letter a e i o u, u is a vowel. So before vowel we use an. Like my brother eats an egg daily. I am an English teacher. Okay, next, there are some words that begins with a vowel when spelled but have a consonant sound when spoken out, so we use a before such words. Okay, तो ऐसे कोई words जो कि consonant sound produce हो रहा है, हम उनसे पहले a use करेंगे, like uniform, used and one. So example, I have to wear a uniform tomorrow. She bought a used phone. I only have a 100 rupee note now. So there are some words that begin with a consonant when spelled but have a vowel sound. So when spoken out, we use an before such words. Like my uncle is an honest man. So here H is silent. And the pronunciation of this word is honest. So here we will put an. Next, she will come back in an hour. Okay, so all these are indefinite articles. Now definite articles. So the is a definite article. We use the to specify a particular noun and before the name of rivers, oceans, seas, mountains, buildings, geographical points, holy books, newspapers, islands, mountains,
and any natural objects that is one of its kind. Okay, तो आर्टिकल हम जिन पर्टिकुलर नाउन से पहले लगा रहे हैं वो या तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो या कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आई मेंशन द नेम, so before these names we must put the. Okay, or one more very important, it also be used before the superlative degree of the adjective. ठीक है, like fastest, greatest, largest, smallest. Okay, now example. The Pacific Ocean is the largest ocean. The sun is the hottest star. The equator divides the earth into two hemispheres. So the equator, the earth, these two are the main thing, having only one and the earth. So that's why the Jupiter is the biggest planet. So Jupiter is one is the biggest planet, we can say. So before biggest we put the. Michael won the gold medal at the Beijing game. Okay, so this much. Now next, omissions of the कहाँ पर नहीं आता? We do not use definite article the before the following, like name of the people, meals of the time, languages and sports or any physical activities. Example, let me take the name of the people. My name is John. Okay, so this much. Thank you and have a nice day.